हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? होपफुली सब अच्छा होंगे। तो यहाँ पे एक बैंक पेंशन में जो नई अपडेट है, रिकवरी फ्रॉम द पेंशन, तो यूनियन की अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको यहाँ पे शेयर करेंगे अमंग ऑल ऑफ यू। सो उससे पहले यहाँ पे इस माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यहाँ पे वीडियो को जरूर लाइक कर देना फॉर द लेटेस्ट जो भी अपडेट्स यहाँ पे आएंगी आप लोग साथ यहाँ पे दोस्तों शेयर करते रहेंगे इन अ वेरी गुड मैनर। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल सर्कुलर। तो सर्कुलर के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है? दैट इज फ्रॉम द स्टेट बैंक रिटायरीज एसोसिएशन 3rd March to the Deputy Managing Director and Chief Development Officer, State Bank of India, Corporate of Center, Mumbai. Recovery from pension in case of discovery of errors in computing pension later. So we are aware that there could be errors and omissions in computing pension despite robust systems. So after all, error is human. So what there are several instances where a lot of pension, lower amount of pension is paid. So in such cases, individual pensions are driven to the court and they are getting their legitimate due through the court of the orders, through the order of the courts. So this may टेक अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। सो अनफॉर्चुनेट इसमें होता क्या है, जो बैंक करता है, बैंक बेसिकली पुश करेगा इंडिविजुअल को ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ देयर लाइफ टू स्पेंड their hard earned money and lead an anxious life. So many a time it is not on account of lack of understanding of law. So what with the full knowledge law, so these sections are on the fringes of imposing punishment on formal employees. So there are many instances where the court have not only passed structures but also imposed costs. So still staff pensioners continue to suffer. So now we have come across case where the bank is recovering the pension from the amount alleged to have paid in excess. So more shocking, in such recoveries are affected without even notifying the affected pensioners so well before. So both recovering monies from pension and that too without even following principles of natural justice do not pass touchstone of law. So the excess amount paid loses its character of pension and it is only amount due to the bank. So the civil procedure code prohibits both attachment and recovery from pension. So the bank cannot have authority to recover or attach pension amounts, so which even the Honorable Supreme Court do not have. So we wish to bring your kind notice that Honorable Supreme Court ने एक जो दोस्तों in a catene of the decisions has consistently held that if the excess amount was not paid on account of a misrepresentation or fraud of an employee, or if such excess payment was made by the employer by applying a wrong principles for calculating the pay and allowances, or on the basis of particular जो interpretation of rules orders which is subsequently found to be erroneous, such excess payment of emoluments और अलाउंसेज जो भी होंगे आर नॉट रिकवरेबल फ्रॉम पेंशन, तो वो पेंशन से रिकवरेबल नहीं होंगे। ये ऐसा हाल ही में जो केस अभी हुआ है, सम ऑफ द डिसीजंस आर, तो आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ केरला में जो भी हैपेंड हुआ है। सो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, पेंशनर्स कैन सीक अ डायरेक्शन that wrong payment should not be recovered, or pensioners are in a more disadvantageous position when compared to in-service employees. So any attempt to recover excess wrong payment could undo जो hardship होगी to them. So unless the pensioners and employees are guilty of any misrepresentation or fraud in regard to the excess payment, nothing could be recovered from pension. ठीक है फ्रेंड्स। सो मोर शॉकिंगली इज द रिडक्शन ऑफ रिकवरी फ्रॉम द पेंशन विदाउट इवन नोटिफाइंग वेल इन एडवांस to enable to enable these pensioners to make arrangement for balanced reduced income. So there is no dispute that the bank is a state and is expected to be model employer with humanity, so it cannot bring misery. सो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लगी है मुझे। सो दैट इज़ वाई आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू शेयर अमंग ऑल ऑफ यू। सो उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड प्लीज़ टेक केयर।